Now question number 1. The photon of energy 3.4 electron volt is incident on a metal having work function 2 electron volt. Find the maximum kinetic energy of photoelectrons. What is the question? Question is, this is a metal surface and a light is incident on it. After this, an electron is ejected from here. So photon of energy, this is incident. So यहाँ से जो energy आ रही है, इसकी वैल्यू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसके ऊपर इसने जो काम किया वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या थी? E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। वी राइट ओवर हियर 3.4 वर्क फंक्शन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ बोला देता हूँ, प्लस काइनेटिक एनर्जी। So value of kinetic energy is equal to 3.4 minus 2, that is 1.4 electron volt. So अगर इसी काइनेटिक एनर्जी को हमको जूल में निकालना हो तो हम क्या करेंगे? हम इसी को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल, और आपका जो आंसर आएगा that means the kinetic energy is converted into joule. Okay, clear? Yes, ma'am. Now next question. In this question we have to find the stopping potential. Clear? Now 4 electron volt is energy. 4 electron volt of energy of incident light of energy 4 electron volt energy of light is incident. मतलब एक मेटल सरफेस है, इस पर जो लाइट पड़ रही है, अब उसकी एनर्जी कितनी दी हुई है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फिर से यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, लेकिन आपकी वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अभी क्या करना है कि आपको कहा गया है कि आप यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए। ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन, ये सब नहीं कहा गया, आपको कहा गया स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए। तब फिर से आपका फॉर्मूला क्या है? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आप इसी से चलिए। ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, वर्क फंक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 माइनस 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला आपको और बताया था, और वो फॉर्मूला आपका क्या था? फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी। ई इज द चार्ज एंड वी इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर? नाउ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है? 2 EV एंड हियर EV। इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, बहुत ध्यान से, ये E और E हम कट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी EV में ही होनी चाहिए, तभी ये ऐसे होगा। तो यहाँ से ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी 2 वोल्ट, बस खत्म। अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे चेंज कर दें, मान लीजिए हमने ऐसे चेंज कर दिया, फाइंड काइनेटिक एनर्जी इन जूल। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी इसको आप मल्टीप्लाई कर देना 1.6 into 10 to the power minus 19, यानी 3.2 into 10 to the power minus 19 जूल। ये आपका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन लेंगे, मैं उसमें आपको और भी चीजें बताऊंगी। If work function is 2 electron volt, find the threshold frequency. So work function is equal to h nu 0, where h is the Planck constant 6.6 10 to the power minus 34, and nu 0 is threshold frequency. So in case of work function 2 electron volt, put right इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करो 1.6 into 10 to the power minus 19,
Planck constant 6.6 into 10 to the power minus 34 into threshold frequency. So threshold frequency इसको हम इधर divide कर देंगे 6.6 into 10 to the power minus 34. मेरा फिर जो आंसर आएगा that was the threshold frequency. Now we solve this 16 to the 32 over 6.6 into 10 to the power minus 19 plus 34. So 16 to the 32 is 3.3. Here point and point get cancelled. So 16 and 33, that is point and 0, approximately 0.5. Okay, and here into 10 to the power 14 minus 9, 5, and 2 minus 1, 1, 15. If we remove this, it becomes 14. And it is threshold frequency, so this is in hertz. 5 into 10 to the power 14 hertz. Moving with velocity 5.4 into 10 to the power 6 meter per second. Now, firstly, analyze. This is the velocity. 5.4 into 10 to the power 6 meter per second. Now, this is the electron. So, remember, learn it. Mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. This is the mass of electron. Generally, it is given in question, but if it is not given in question, you must remember this. This is the mass of electron. Now, next thing we know, Planck constant 6.6 into 10 to the power minus 34. Now, formula for de Broglie wavelength, h upon p. Okay, the main formula for de Broglie wavelength is h upon p. That is h upon mc, mass into velocity. So, velocity, that is c. Clear? Now we substitute all the values over here. 6.6, 10 to the power minus 34 into 9.1 into 10 to the power minus 31 into 5.4 into 10 to the power 6. And when you solve this, you get the wavelength of the electron. Now, how will you solve? 6.6 upon 9.1 into 5.4. Take all the digits over here into 10 to the power minus 34. This is minus, so plus 31 and minus 6. Okay. Now it is easy to solve this. Okay. Yes, ma'am. So when you solve, you get the value 0.135 into 10 to the power minus 9. Clear? When you solve, you can tally the answer. Now this is another question here. Kinetic energy is given of for the particle and we have to find the de Broglie wavelength. Now this is again the particle is electron. It is mass of the particle 9.1 into 10 to the power minus 31. Now whenever de Broglie wavelength h 6.6 into 10 to the power minus 34. And kinetic energy is this. Kinetic energy is 3.4 electron volt. Now we have the formula lambda is equal to, tell me what is the formula? Just see in your notebook and tell me. Lambda is equal to h upon under root 2mk. This is the formula when kinetic energy is given. Okay. Now, kinetic energy is given in electron volt. So be careful. Convert this kinetic energy into joule before putting this into the formula. So it becomes 3.4 into 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. This step is very important. If you don't do this step, your answer will be wrong. Now substitute all the values. H 6.6 into 10 to the power minus 34 over under root
to mass of the particle 9.1 into 10 to the power minus 31 into 3.4 into 1.6 into 10 to the power minus 9. Now it is a tough task to find this and try to find after that under root. So I'm going to solve this question for you. See, firstly we solve this under root values. 2 into 9.1 into 3.4 into 1.6 into minus 31 minus 19. Clear? Now, either use your mathematics or round off figure. For example, 16 to the 32, 3.2 into 3.4 into 9.1 into 9 over 10, 3 over 4, 1, 5, 50. Okay. Now you can take approximately round off figure. These are approximately same. 3 and 3. And here 9 can also be written as 3 into 3. 9.1. 3 3s are 9. So here from here we get 3, from here we get 3. Okay. So 3 into 3 and 10 power minus 50, that means 10 power minus 25. Approximately. Clear? Hmm? Yes, sir. So ultimately we can write over here 9 into 10 to the power minus 25. So 3 2s are 6, 3 3s are 9. Now 3 7s are 21. 0.0, 3 1s are 3 approximately into 10 to the power plus 25. 14 minus 5 minus 9. Clear? So what will be the answer? 0.71 into 10 to the power minus 9. That means if we put this to this, it comes over 10 over here. Then ये 10 ऊपर चला जाएगा. 7.1 into 10 to the power minus 10 आ गया meter. We have the formula. Lambda is equal to 1.227. Simply. Now potential difference is what? 100 volt. So we just simply write over here 1.227 under root 100. That means 1.227 upon 10. That means 0.1227 nanometer. So easy.